Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 6 Plants in the Surrounding and Environment. Here is some warm-up questions. Look at these pictures and name these plants. Okay students, look at these pictures and write down their names. You can do it by yourself. Here is, let's know about parts of the plants, root, types of root, their function and example. Shoot, functions of the stem, parts of a leaf, functions of the leaf, photosynthesis, transpiration process, iodine test for the presence of starch in leaves, uses of plants. So these are some topics we will discuss in this chapter. Here is parts of a plant. Plants play a very important role on earth. They provide food and oxygen to all other living things. Plants are seen almost everywhere. They grow on land, on mountains, in deserts and under the sea. We know plants grow mostly from seeds when they get enough water, sunlight and air. So बच्चे जो plants हैं उनको एक बहुत important role होता है हमारी अर्थ पे. वो हमें फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. प्लांट्स जो है हर जगह है, वो ग्रो करते हैं लैंड्स पे, माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स पे और सी में. ओके सो जो हमारे प्लांट्स हैं मोस्टली वो किससे ग्रो करते हैं बच्चा? सीड से. और वो जो ग्रो करते हैं कब ग्रो करते हैं? जब उन्हें इनफ वाटर और सनलाइट मिलती है. ओके हियर इज पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. रूट, स्टेम, fruit, flower, branches and leaf. These are some parts of a plant. Plants have different parts just like we have. We have arms, legs, a heart and lungs to help us survive. Each of our body parts has a certain job to do. Plants too have different parts, each with its own job to do. They must have roots, stems, leaves and bear flowers and fruits. Each part of the plant must do its job so the plant can stay healthy and grow. So स्टूडेंट क्या होता है जो हमारे प्लांट्स हैं उनके डिफरेंट पार्ट होते हैं और जो प्लांट के डिफरेंट पार्ट है उनका अपना एक काम होता है जिसकी वजह से आपका प्लांट क्या होता है? हेल्दी होता है और ग्रो करता है. जैसे रूट्स, stems, leaves and flowers, fruits. Okay, here is the portion of the plant that grows above the ground is the shoot and that grows below the soil is called the root. So आपका जो प्लांट है बच्चे उसके दो पार्ट होते हैं. एक जो आपके अबोव द ग्राउंड ग्रो करता है दैट इज शूट और जो बिलो द ग्राउंड या बिलो द सॉइल जो है आपका ग्रो करता है दैट इज रूट. The typical plant body consists of two systems. Look here, the root system and the shoot system. Root system usually underground, shoot system usually above the ground. Okay student, first we will read about the root. The root system. Root is the underground part of the plant's body and grows toward the force of gravity. It fixes the plant within the soil and absorbs water and mineral nutrients from the soil. It stores excess food. So बच्चे आपका जो रूट सिस्टम होता है वो कहाँ ग्रो करता है? आपकी सॉइल के बिलो द ग्राउंड. ओके और वो किसके टुवर्ड्स करता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी के टुवर्ड्स ग्रो करता है. और जो आपका प्लांट होता है उसको फिक्स करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर सॉइल से, मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के लिए. ओके there are two main kind of roots. Tap roots. It consists one main long thick root growing downwards from which many thinner roots develop. Tap root goes deep into the soil in search of water and minerals. Sugar beet or carrot, bean, tea, people etc. have tap roots. So बच्चे tap roots क्या होती है? एक long thin root होती है और उसकी साइड से बहुत थिन रूट्स जो है वो निकली होती है, डेवलप हो रखी होती है. और ऐसी रूट्स किन प्लांट्स में होती है? जैसे शुगर बीट, कैरेट, बीन, टी, पीपल एक्सेट्रा. These plants have tap roots. Now we have fibrous root. In case of fibrous root, there is no main root. It consists of a dense equal size roots that arise from the stem. The roots grow downward and outward from the stem, branching repeatedly to form a mass of fine roots. Fibrous root does go very deep in the soil. Lilies,
grasses, wheat, rice, palm and onion etc. have fibrous root. तो बच्चे जो आपकी fibrous root होती है वो grow करती है downward इक्वल जो आपके स्टेम का साइज होता है वो बहुत डीप जाती है सॉइल में, जैसे आपके ग्रास है, वीट है, राइस है, इन सब की रूट कैसी होती है बच्चा? फाइब्रस रूट. हियर इज फंक्शंस ऑफ रूट. Root attach the plant to the ground. It provides support to the plant and helps in holding the plant firmly in the ground. So जो आपकी रूट है बच्चा वो प्लांट की बॉडी से अटैच होते हैं और वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट प्लांट को और हेल्प करती है प्लांट को ग्राउंड से जुड़ा रहने में. Here is root hairs of the plant absorb water, mineral from the soil and passes it to the stem. और जो आपके रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और कहाँ पास करते हैं बच्चा? स्टेम. सम रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश एंड बीटरूट एक्सेट्रा स्टोर फूड prepared by the plant. We eat these roots. So आपकी जो कुछ रूट्स हैं लाइक रेडिश, कैरेट, बीटरूट वो फूड को स्टोर करती है कहाँ? रूट्स में, और वो हम उसको क्या करते हैं? हम बच्चा खाते हैं. Roots bind the soil which otherwise may be blown away by wind or washed by water. Roots prevent soil erosion. So बच्चा roots क्या करती है? Soil erosion को prevent करती हैं. Okay, look here is a picture. Carrot, radish, beetroot. Here is the shoot. The shoot system. It is the aerial part of the plant body and enables a plant to grow taller, to get sunlight and helps plant to prepare food. So बच्चे शूट सिस्टम क्या होता है? एरियल पार्ट होता है किसी भी प्लांट की बॉडी का, ग्रो करता है लॉन्ग टॉलर टू गेट सनलाइट, हेल्प्स करता है प्लांट की फूड को प्रिपेयर करने में. It composed of erect stems on which are attached leaves, flowers, fruits, branched and buds. Leaves are attached to the stem at the region called nodes. So बच्चे जहाँ आपकी लीव्स जो है अटैच होती हैं स्टेम से, उस रीजन को हम नोड बोलते हैं और हमारी जो स्टेम होती है उसपे फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं. सो वो सब क्या होते हैं बच्चा? आपके स्टेम से रिलेटेड होते हैं. ओके, हियर इज द स्टेम. It supports the upper parts of plants. It carries water and nutrients from root to leaves, needed for plants to grow and food produced by the leaves to other part of the plant. So बच्चे आपका जो शूट सिस्टम या हम बोलते हैं स्टेम जो होती है वो क्या करती है? आपके प्लांट के अपर पार्ट से वाटर और न्यूट्रिएंट को कैरी करती है कहाँ तक? रूट्स तक, और रूट से आपके मिनरल और इन सबको कैरीज करती है आपके पूरे प्लांट्स. Okay, big trees like neem, mango, peepal, etc. have a strong, thick and woody stem. Such a stem is called trunk. So जो आपके strong trees होते हैं या big trees like neem, mango, उनकी जो आपकी stem होती है वो woody होती है और उसको हम बच्चा क्या बोलते हैं? Trunk बोलते हैं. Do you know? The tallest tree ever was in Australian eucalyptus in 1872. It was measured as 435 feet tall. तो बच्चे जो आपकी वर्ल्ड का टॉलेस्ट ट्री है वो कितना टॉल है? 435 फीट. ओके, bushes such as rose and hibiscus have thin and hard stem. Some plants have thick but soft stem. Example, banana, wild herbs such as tomato and mint have soft green stem. Climbers and creepers have weak soft and green stems and cannot hold the plant upright. तो बच्चे जो आपके bushes होते हैं लाइक रोज और हिबिस्कस, उनकी स्टेम हार्ड होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स जिनकी स्टेम थिक तो होती है लेकिन सॉफ्ट होती है जैसे बनाना, और जो हर्ब्स होते हैं उनकी स्टेम ग्रीन होती है, और क्लाइंबर्स और क्रीपर तो बहुत वीक होते हैं, वो प्लांट को होल्ड नहीं कर सकते कि वो स्टैंड अपराइट हो सके. ओके, हियर इज सम पिक्चर्स. लुक एट दिस पिक्चर्स. मैंगो ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, बनाना ट्री. ओके, here is creepers spread on ground. Example, watermelon, strawberry, pumpkin, etc. Climbers need support to climb. Examples, money plant, cucumber, pea plant, etc. So बच्चे आपके creepers और climbers क्या है? वो नहीं आपका जो आपके ground पे ही फैलते हैं, उन्हें कोई support चाहिए होती है. ठीक है, look here is some pictures. Cucumber plant, grapevine, watermelon plant and pumpkin plant. Okay, here is functions of a stem. The stem provides support to a plant above the ground. It bears branches, leaves, buds, flowers and fruit.
जो आपकी स्टेम है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराती है बच्चा, और उस पे ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं एंड fruits, flowers, everything. Stem transport water and mineral from root to other parts of the plant. It also transport food prepared by the leaves to different parts of the plant. So बच्चे जो आपकी स्टेम है वो वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम रूट्स और फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम लीव्स. Here is some pictures. Look here. Sugar cane and potato. Some underground stems store food such as sugar cane, potato, ginger, etc. Okay. Here is the leaf. Leaves are of different shape and size. They are an important part of plant as they manufacture food for the plants and are therefore known as the kitchen of the plant. So बच्चे जो leaves है वो different shape होती है, size होता है, वो important part है आपके plants का, क्योंकि वो plant का खाना बनाते हैं. Okay, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? Kitchen of the plant. Leaves are mostly green in color due to the presence of green substance called chlorophyll that can absorb sunlight. The outer surface of the leaf has a waxy coating which protects the leaf. The different parts of a leaf are. So बच्चे जो आपकी लीव होती है वो ग्रीन कलर की होती है मोस्टली, और उनमें क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो उसकी हेल्प से क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है. ओके, द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर. The flat surface of a leaf is called leaf blade or lamina. It has veins running across within the leaf. तो बच्चे जो आपकी लीफ होती है उसकी फ्लैट सरफेस को हम लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं, और उसमें जो वेन्स होती है वो पूरी लीफ की सरफेस पे आपको दिखाई देंगी. The main vein और midrib runs through the middle of the leaf. जो मेन वेन होती है या midrib जिसको हम बोलते हैं वो आपकी मिडल में होती है लीफ के. The side veins are thinner tubes that come out of the midrib and spread throughout the leaf blade. It is through these veins that the water is carried to the leaf. They also carry food from the leaf to all parts of the plant. जो आपकी साइड वेन्स होती हैं, थिनर ट्यूब्स, वो क्या करती हैं बच्चा? हेल्प करती हैं लीफ को पानी देने में और खाने को ट्रांसपोर्ट करने में टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Here is the part that attaches the leaf to a branch or a stem is called the leaf stalk. It is also called the petiole. जो आपका पार्ट होता है लीफ का जो ब्रांच से क्या होता है बच्चे अटैच होता है, उसको लीफ स्टॉक या फिर हम petiole बोलते हैं. Tiny opening on the surface of the leaves called stomata, singular stoma, helps in taking and giving out air. Stomata can be seen only under a microscope. So बच्चे आपकी जो लीव होती है उसमें क्या होते हैं? टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और सिंगुलर दैट इज स्टोमा, और वो आपकी ब्रीथिंग में हेल्प करता है लीव्स की. लुक हियर, हियर सम पिक्चर्स. लुक एट दिस पिक्चर. दैट इज ब्लेड, midrib, side veins, margin, apex. Look here in this picture, that is stomata. Do you know? Plants also need minerals from the soil to grow. Nitrogen helps them grow and make leaves. Phosphorus helps to grow strong roots. Potassium helps the plant make fruit and it keeps them healthy. तो बच्चे जो आपके प्लांट्स हैं उनको भी मिनरल्स की नीड होती है, जैसे नाइट्रोजन उनकी ग्रो करने में हेल्प करता है, फॉस्फोरस स्ट्रॉन्ग ग्रो करने में हेल्प करता है रूट्स की, और पोटेशियम हेल्प करता है प्लांट्स को फ्रूट और एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए. ओके, हियर इज फंक्शंस ऑफ द लीफ. These are the parts of the plant where food is made by the process of photosynthesis. That's why leaves are called the food making factories of green plants. So बच्चे जो आपके प्लांट है ये उसका मेन पार्ट है जहाँ पे खाना बनता है, that is the process photosynthesis. और जो leaves खाना बनाती हैं इसलिए हम उनको factories, food factory of green plants बोलते हैं. Here is leaves give out oxygen in the process of photosynthesis. All living being need oxygen to live. और जो हमारी लीव्स होती हैं वो ऑक्सीजन को गिव आउट करती हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. सम लीव्स स्टोर फूड इन दैम सच एज मिंट, कैबेज एक्सेट्रा. सो कुछ जो आपकी लीव्स हैं वो खुद में क्या करती हैं? फूड को स्टोर करती हैं, दैट इज मिंट एंड कैबेज. हियर इज वी हैव चिकन मीट. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Okay, here is photosynthesis, the process of making food. Plants are called autotrophs because they can make their
because they can make their own food. तो बच्चे प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं. क्यों? क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. By taking water, that is H2O, through the roots, carbon dioxide, that is CO2 from the air, and light energy from the sun. Plants can perform photosynthesis to make glucose, sugar, and oxygen, O2. Okay. स्टूडेंट, तो प्लांट क्या करते हैं? आपके रूट से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं, सन से एनर्जी लेते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. Okay student, and CO2, H2O and O2, these are the symbols of carbon dioxide, water and oxygen. Look at this picture. Here is photosynthesis, water, carbon dioxide, then comes out oxygen. Okay, here is this process by which green plants prepare their own food using carbon dioxide, water and minerals in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. So बच्चे, ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल और सनलाइट होती है क्लोरोफिल की हेल्प से, दैट इज फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो का मीनिंग क्या होता है बच्चा? लाइट. और सिंथेसिस का मीनिंग सब चीजों को एक साथ लेकर आना. लुक हियर, हियर इज अ रिएक्शन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी हैव ग्लूकोज, oxygen plus water vapor. Okay. During the process of photosynthesis, the food that the leaf prepares is a kind of sugar called glucose. तो बच्चे, photosynthesis के ड्यूरेशन में जो खाना लीफ प्रिपेयर करती है वो एक शुगर की तरह होता है, that is glucose. The glucose may further change to starch before the plant stores it in fruit, stem or root or leaves. तो बच्चे, ग्लूकोज किस में चेंज हो जाता है? स्टार्च में चेंज हो जाता है, इससे पहले कि प्लांट स्टोर करे फ्रूट को, स्टेम को, लीव्स को. ओके, हियर इज, लुक एट दिस पिक्चर्स, फ्रूट्स, कैरेट्स, cabbage. Here is the oxygen that is given off into the atmosphere through the stomata during photosynthesis is necessary for animals and human beings to breathe in. तो बच्चे, जो ऑक्सीजन आपकी एटमॉस्फेयर को प्लांट्स देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स. प्लांट इन टर्न यूज द कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी गिव आउट एंड प्यूरिफाई द एयर. प्लांट्स किसका यूज करते हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसे हम ब्रीथ आउट करते हैं और प्लांट्स एयर को प्यूरिफाई करते हैं. एट नाइट when there is no sunlight, plants do not make food. They then breathe in oxygen and give out carbon dioxide as animals and human beings do. और जब रात में कोई सनलाइट नहीं होती है तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते, उस टाइम पे वो ब्रीथ इन ऑक्सीजन करते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं. ट्रांसपिरेशन रिलीजिंग वाटर वेपर. Transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from aerial parts such as leaves, stems and flowers in the form of water vapor. So बच्चे, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वाटर मूवमेंट का किसी प्लांट में. कैसे? जब वो प्लांट में मूवमेंट होती है और उसका इवेपोरेशन होता है प्लांट के एरियल पार्ट से, जैसे लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स. किसके फॉर्म में बच्चा? वाटर वेपर की फॉर्म में. Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for growth and metabolism. तो बच्चे, प्लांट्स के लिए वाटर नेसेसरी है, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है. किसके लिए? ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए. The remaining water is released by the plants through transpiration. This provides a cooling effect to the plants. Also, as the water is released, the roots pull more water from the soil, which also bring with it nutrients from the soil which are required by the plant. So बच्चे, क्या होता है जब आपका प्लांट जो है वो रिलीज कर देता है वाटर को, किसकी फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में. फिर से वो कूल डाउन हो जाता है प्लांट, दोबारा वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से, और उसके बाद क्या करता है? वो जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है वो भी एक नए न्यूट्रिएंट्स के साथ प्लांट में आता है जो प्लांट को चाहिए होते हैं. लुक हियर, लुक एट दिस पिक्चर. ट्रांसपिरेशन इन अ प्लांट. To study transpiration, you can do this simple experiment. On a warm sunny day, put a clean dry plastic bag over a branch with leaves on it. So आपने क्या करना है? जब बहुत अच्छा दिन हो तो उसमें आपने एक प्लास्टिक बैग लेना है, उससे अपने किसको कवर कर देना है? प्लांट्स को, उसकी ब्रांचेस और लीव्स को. Seal the bag closely to the branch. और बैग को सील करना है. Observe for an hour, water droplets can be seen in the plastic bag. और अगर आप उसे 1 घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी प्लास्टिक बैग में. ओके,
Here is uses of plants. First one is food. Plants are the main source of our food. We use different parts of different plants as food. Many food items such as cereals, pulses, vegetables, fruits, nuts, oil and spices are obtained from plants. We also get tea, कॉफी, शुगर एंड कोका बीन्स फ्रॉम प्लांट्स. तो बच्चे हमें बहुत सारी चीजें प्लांट से मिलती हैं, जैसे पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है बच्चे? हमारे प्लांट से मिलता है. हियर इज मेडिसिन. Many medicines are made from plants and these plants are called medical plants. Neem, tulsi, brahmi, bansa, bale, etc. are known as medical plants. We use these plants to cure patients suffering from various disease. So बच्चे कुछ प्लांट्स हैं जिनका हम यूज किसके लिए करते हैं? मेडिसिन के लिए करते हैं, जैसे नीम, तुलसी, ब्राह्मणी एक्सेट्रा. इनसे हमें क्या मिलता है बच्चे? ये प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं किसी बीमारी से क्या करने के लिए? लड़ने के लिए, या फिर उसका वो आपका ट्रीटमेंट होता है. ओके, हियर इज पेपर. बैम्बो, eucalyptus, etc. are used to make paper for writing and printing purposes. Rags of cotton are also used to make paper. So बच्चे ये कुछ plants हैं जिनसे हमारा क्या बनता है? Paper. Here is rubber. Some plants give us gum like acacia, etc. We get rubber from rubber plants. This rubber is used for making tires for many vehicles. We erase pencil marks with the help of rubber or eraser. तो बच्चे आपकी जो रबर है वो भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है, जिसकी हेल्प से हम टायर्स बनाते हैं. इरेजर जो हम यूज करते हैं वो भी एक रबर होती है. ओके, हियर इज वुड. वी गेट टिम्बर एंड फायरवुड फ्रॉम ट्रीज. आवर चेयर्स, टेबल्स, डोर्स, विंडोज एक्सेट्रा आर मेड ऑफ वुड. द वुड ऑफ ट्रीज लाइक teak, sisal, sal, etc. is essentially used to make different furniture. So बच्चे जो wood है वो भी हमें किससे मिलती है? ट्रीज से. और इससे हम क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप का फर्नीचर. Here is cotton. We get cotton from cotton plants. It is used to make all types of cotton cloths such as bedsheets, towels, etc. So cotton हमें कहाँ से मिलता है बच्चे? cotton plant से, और उससे हम cotton cloths बनाते हैं. Here is fibers. There are some plants that give us fiber for making ropes, gunny bags, etc. Hemp, jute, etc. are such plants. So बच्चे जो आपकी फाइबर्स हैं वो भी हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. Here is perfumes. Flowers of certain plants are used to make perfumes. The flowers of rose, jasmine, etc. are good for making perfume. Flowers are also used for different purposes like to make garlands and for other decorative purposes. तो बच्चे परफ्यूम भी हमें किससे मिलते हैं? फ्लावर्स से. और फ्लावर्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. और फ्लावर्स को हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं. Here is pollution remover. Plants and trees save us from air pollution. Green plants take the carbon dioxide from the air in the process of photosynthesis and give back oxygen to the air. We breathe in oxygen from the air and give out carbon dioxide. Thus, we give carbon dioxide to the plants. They return us oxygen. Hence, air is saved from being polluted by the carbon dioxide. So, बच्चे जो आपके plants या trees हैं वो क्या करते हैं? pollution remover की तरह भी work करते हैं. जैसे normally क्या करते हैं? हम लोग carbon dioxide release करते हैं और plants carbon dioxide को क्या कर लेते हैं? intake कर लेते हैं. इससे क्या होता है? हमारी air polluted नहीं होती. Here is manure. Plant wastes are used to make manure. This manure is utilized for the growth of other plants and crops. तो बच्चे जो प्लांट का वेस्ट होता है उससे हमें क्या मिलता है? मैन्योर्स मिलते हैं. और मैन्योर किस लिए यूज होते हैं? दूसरे प्लांट्स और क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए. Here is we have chicken meat. As we already discussed about these things, so you can do it by yourself. What we learned in this chapter, now we will discuss it in a nutshell. Here is roots fix the plants to the soil and provide water mineral to the plant. रूट आपके प्लांट को फिक्स कर देती है सॉइल में और उसे वाटर मिनरल प्रोवाइड कराती है. The stem supports the plant and carries the water and nutrients from roots to leaves needed for plants to grow and food produced by the leaves to other part of the plants. So root stem क्या करती है बच्चे? सपोर्ट करती है
और कैरी करती है वाटर न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द रूट्स और फूड को कैरी करती है फ्रॉम द लीव्स. ओके, हियर इज the green leaves contain chlorophyll and helps the plant to prepare food by the process of photosynthesis. Plants use the food for growth, metabolism, and store the extra food in fruits, stems, roots, leaves, and seeds. The extra water is released by the aerial parts of the plant in the form of water vapor through the process called transpiration. Okay, so जो आपका extra water release करते हैं aerial parts of plant को, उस process को हम बोलते हैं बच्चा transpiration. Plants are very useful for us. We get many useful products from plants. Okay, here is some keywords. Aerial, operating in the air. Autotrophs are organisms that can produce their own food. Trunk, hard, woody and strong stem of trees. Here is transpiration, release of water vapor from stomata in leaves. Okay students, thank you students. We will meet again in the next chapter.